परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो। For today meditation, आज के ध्यान के लिए आजच्या मननाकरिता we must know what is the voice of God. आज हमें इस बात को जानना चाहिए कि ईश्वर की आवाज क्या है। आणि आज आपण ही गोष्ट जाणून घेतली पाहिजे की परमेश्वराची वाणी ती काय। Psalms 81 chapter 8th verse, 11th verse and 13th verse. 81 भजन के 8 वचन, 11 वचन और 13 वचन पढ़ेंगे। 81 स्तोत्र त्याचं 8, 11 आणि 13 वचन आपण वाचूया। अहो माझ्या लोकांनो ऐका, मी तुम्हास बोध करीतो, हे इस्रायला तू माझे ऐकशील तर बरे होईल। परंतु माझ्या लोकांनी माझी वाणी ऐकली नाही, इस्रायलाने माझे ऐकले नाही। माझे लोक माझे ऐकतील, इस्रायल माझ्या मार्गांनी चालेल तर बरे होईल। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले। Hear, O my people, and I will testify unto thee, O Israel, if thou wilt hearken unto me. But my people would not hearken to my voice, and Israel would none of me. Oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. This is a complaint of the heavenly God. और ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर की एक शिकायत है जो हम यहाँ पर देखने पाते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर जो पिता आहे त्याची एक तक्रार आहे जी आपण या ठिकाणी वाचली। Children of Israel called the God's people. इस्राएल के संतान ईश्वर के संतान करके कहलाए जाते हैं। इस्रायल लोक हे परमेश्वराचे लेकर असे म्हटले गेले आहे। But God complained about that, about them that they are not hearken the voice of God. लेकिन ईश्वर परमेश्वर उनके संबंध में यह शिकायत करता है कि वे मेरी आवाज या मेरी बातों को नहीं सुनते हैं। परंतु परमेश्वर त्यांच्याविषयी अशा प्रकारे तक्रार करतो की माझी वाणी हे लोक ऐकत नाही। Dear children of God, tonight God urged me to tell this truth that you have to hear the voice of God. परमेश्वर की प्रिय संतान, आज परमेश्वर मुझे इस बात की प्रेरणा देते हुए क्या कहा है कि मेरे लोग मेरी आवाज को सुनना चाहिए। प्रिय देवाच्या लेकरांनो, आज सायंकाळी परमेश्वर मला अशा रीतीने सांगत आहे की माझ्या लेकराने माझी वाणी ऐकावी। When you read the John 5th chapter and 25th verse, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 5 के 25 वचन को जो हम लोग पढ़ते हैं, योहानाचं पुस्तक त्याचा 5वा अध्याय वचन 25 जेव्हा वाचतो, John 5th chapter 25th. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 25, योहान 5 त्याचं 25वं वचन। मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो की मेलेले लोक देवाच्या पुत्राची वाणी ऐकतील व जे ऐकतील ते जिवंत होतील। अशी वेळ येत आहे, किंबहुना आता आलीच आहे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Very soon they shall hear the voice of the Son of God. बहुत ही शीघ्र परमेश्वर के पुत्र की आवाज मृतक सुनेंगे। आणि लवकरच देवाच्या पुत्राचे आवाज ते लोक ऐकतील। Dear children of God, we are going to hear the voice of our beloved Lord Jesus Christ. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की आवाज हम सुनने जा रहे हैं। प्रिय देवाच्या लेकरांनो, आपला प्रभू येशू ख्रिस्ताची वाणी आज आपण ऐकणार आहोत। Children of Israel disobey the voice of God, but we have to obey the voice of the Lord Jesus. इस्राएल के संतान परमेश्वर की आवाज को नहीं सुने, नहीं माने, लेकिन हम यीशु मसीह की आवाज को सुनना है। आणि इस्रायल लोकांनी देवाची वाणी ऐकली नाही, त्याचं पालन केलं नाही, परंतु आज आपण त्याची वाणी ऐकावी। There are so many voices we can hear in the world. इस संसार में विभिन्न प्रकार की आवाजों को हम सुन सकते हैं। आणि या जगामध्ये निरनिराळ्या प्रकारच्या वाणी आपण ऐकतो। Voice of the birds, voice of the animals, voice of the people, and voice of the devil also. हम लोग पक्षियों की आवाज, पशुओं की आवाज, मनुष्य की आवाज, शैतान की आवाज इस संसार में सुन सकते हैं। पक्ष्यांची आवाज, मनुष्याचा आवाज, शैतानाचा आवाज या जगामध्ये आपण ऐकतो। First of all, we have just meditated about the voice of man. हम लोग सबसे पहले मनुष्य की आवाज की ओर थोड़ा ध्यान देंगे। आणि प्रथम मनुष्याच्या आवाजाकडे, वाणीकडे आपण लक्ष लावू।
Acts 12 chapter 22 verse says, प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 22 वचन कहता है, प्रेषित 12 अध्याय त्याचं 22 वचन असं म्हणतं, and the people gave a shout saying, it is the voice of a God, not a man. तब लोग पुकार उठे, तो यह मनुष्य की नहीं ईश्वर की शब्द करके कहा। तेव्हा लोक गजर करून बोलले, ही देववाणी आहे, मनुष्याची वाणी नव्हे. When king going on speaking to the congregation, people shouted that it is not voice of God, but it is a voice of God, not voice of man. जब हेरोद राजा लोगों के मध्य में प्रवचन देते चले जा रहा था, जब वो प्रचार करते चले जा रहा था, तब लोगों ने ऊंची आवाज से इस प्रकार कहा, ये एक मनुष्य की आवाज नहीं, ये एक ईश्वर की आवाज है। आणि हेरोद राजा जेव्हा त्या लोकांमध्ये तो बोलत होता, तेव्हा त्या लोकांनी म्हटलं की ही मनुष्याची वाणी नव्हे, परंतु देवाची वाणी आहे. When people appreciate that voice, immediately the punishment and the power of God came and smite the Herod, and he killed there himself. और जब लोग इस हेरोद राजा की प्रशंसा करने लगे, और जब उसके नाम को ऊंचा करने लगे, उस समय में परमेश्वर ने हेरोद को सजा के तौर में ऐसा मारा कि वो वहीं पर मर गया। आणि त्या ठिकाणी जेव्हा हेरोद राजाला लोक त्याची प्रशंसा करू लागले, त्याची बड़ाई मारू लागले, तेव्हा परमेश्वराने त्याला शिक्षा म्हणून अशा प्रकारे मारलं की त्याच ठिकाणी तो ठार झाला. Second, we are hearing the voice of the devil. दूसरा, शैतान की आवाज को हम देखेंगे। दुसरं, सैतानाची वाणी आपण पाहू. Genesis 3rd chapter 1st verse says, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 पहला वचन में हम देखते हैं, उत्पत्तीचं पुस्तक 3रा अध्याय त्याचं पहिला वचन. now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. He said unto the woman, yeah, hath God said, ye shall not eat the every tree of the garden. उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय पहला वचन, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल ना खाना? उत्पत्ती 3 त्याचं पहिल्या वचनात आपण वाचतो, परमेश्वर देवाने केलेल्या सर्व वंशनात सर्प फार धूर्त होता. तो स्त्रीला म्हणाला, तुम्ही बागेतल्या कोणत्याही झाडाचे फळ खाऊ नये असे देवाने तुम्हाला सांगितले, हे खरं काय? Matthew 4th chapter 3rd verse says, मत्ती रचित सुसमाचार 4थे अध्याय के 3रे वचन में लिखा है, मत्तई 4 त्याचं 3रा वचनात आपण वाचतो. there we saw that our Lord tempted by the devil voice. और वहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह एक शैतान के द्वारा परखा जाता है, इस बात को हम वहां पर देखने पाते हैं। आणि त्या ठिकाणी आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्त सैतानाद्वारे पारखला जातो. And when the tempter came to him and said, if thou be the son of God, command that these stones be made bread. 3रे वचन में इस प्रकार लिखा है, तब परखने वाले के पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए. तेव्हा परीक्षक त्याच्या जवळ येऊन म्हणाला, तू देवाचा पुत्र आहेस तर या धोंड्यांच्या भाकरी व्हावी अशी आज्ञा कर. Thirdly, we are seeing about the God's voice. तीसरा, हम लोग ईश्वर की आवाज को देखेंगे. आणि तिसरं, आपण परमेश्वराची वाणी पाहू. As we read 81 Psalm 8th verse and 11th verse, 13th verse. और जैसे कि हमने 81 भजन के 8, 11, 13 वचन को पढ़ा, आणि जसं आपण स्तोत्र संहिता 81, 8, 11 आणि 13 वचन वाचलं, Lord complained about the children of God that they are not hearkening my voice. परमेश्वर इस्राएल के संतानों के संबंध में यह शिकायत कर रहा है कि वे मेरी आवाज नहीं सुनते. परमेश्वर इस्रायल लोकांविषयी अशी तक्रार करत आहे की माझे लेकरं माझी वाणी ऐकत नाही. Dear children of God, tonight examine your life. Are you hearing the voice of God? परमेश्वर की प्रिय संतान, आज की रात अपने जीवन को आप परख के देखो कि क्या आप ईश्वर की आवाज सुनते हो. प्रिय देवाच्या लेकरांनो, आज रात्री तुमच्या स्वतःचं परीक्षण करून पहा की तुम्ही देवाची वाणी ऐकता का नाही. As sister gave the testimony, she heard the voice of God and obeyed the voice of God and came for this ministry. जिस प्रकार बहन ने आज गवाही दिया कि उसने परमेश्वर की आवाज को
सुना और उस आवाज को सुन करके उसने अपने जीवन को सौंपते हुए सेवकाई में चली आई। आणि जसं आपण साक्ष ऐकली की आपल्या बहिणीने म्हणालं की तिने परमेश्वराची वाणी ऐकली, वाणी ऐकून तिने आपलं जीवन देवाच्या सेवेकरिता समर्पण केलं. Every man's duty that we have to obey the voice of God. हर एक मनुष्य की कर्तव्य यह है कि वह ईश्वर की आवाज को सुनना चाहिए. प्रत्येक मनुष्याचं कर्तव्य आहे की त्याने देवाच्या वाणीकडे लक्ष द्यावं व ती ऐकावी. First of all, we meditate about the voice of man. सबसे पहले हमने मनुष्य की आवाज के विषय में ध्यान किया. सर्वात प्रथम मनुष्याच्या वाणीविषयी आपण मनन केलं. When we go through that Proverbs 7 chapter 21 verse, नीति वचन अध्याय 7 के 21 वचन की ओर जब हम जाते हैं, नीती सूत्रे 7 अध्याय त्याचं 21 वचन जेव्हा वाचतो, with her much fair speech, she caused him to yield with the flattering of her lips. She forced him. और ऐसी बातें कह कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया. तिने आपल्या पुष्कळ मोहक भाषेने त्याला वश केले, आपल्या वाणीच्या माधुर्याने त्याला आकर्षित घातले. Dear children of God, nowadays so many people they are fallen in sin with the fair speech. आज कई लोगों को पाप में बातों की सुंदरता या मधुरता को सुन करके गिरते हुए हम लोग इन दिनों में देखने पाते हैं. आणि आज आपण पाहतो की बोलण्याच्या मोहकामध्ये आज पुष्कळसे लोक पापांमध्ये पडतात. So many people hearing the voice of men and they fall into the sin. कई लोग मनुष्य की मीठी और चुपड़ी बातों को सुनते हुए पाप में गिर पड़ते हैं. पुष्कळसे लोक मानवाच्या गोड गोड व लागवी भाषे ऐकून ते पापामध्ये पडतात. Nowadays Satan using internet for so many people. आज शत्रु शैतान इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा है कई लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए. आणि आज सैतान इंटरनेटचा उपयोग करत आहे जेणेकरून लोकाला त्याच्याकडे आकर्षित करण्यास. Example, chatting video chat using Skype, Yahoo, messengers, like that. So many people falling in that. इन दिनों में याहू चैटिंग के द्वारा, स्काइप के द्वारा, ऐसे अलग अलग इंटरनेट के माध्यम से होने वाले बातचीत या चैटिंगों के द्वारा अनेक लोग पाप में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं. आणि आज आपण पाहतो की याहू चॅट असू द्या किंवा स्काइप असू द्या, याच्याद्वारे सैतान पुष्कळांना पापामध्ये मोहामध्ये पाडत आहे. All the students, especially all the believers and some workers also, they are going through the Facebook and WhatsApp and mobile. कई विश्वासी लोग, कई बच्चे जो विद्यार्थी हैं वे लोग, यहाँ तक कि कुछ हद तक कुछ सेवक लोग भी फेसबुक और व्हाट्सएप में फंदे में उलझ फंसे हुए हैं. आणि आपण पाहतो की कित्येक विश्वासणारे, कित्येक लेकर, एवढेच नव्हे तर कित्येक सेवकजण सुद्धा फेसबुक, व्हॉट्सअप याच्या अधीन झाले आहेत. They will go on chatting with each others and finally fall in sin. एक दूसरे से बातचीत करते 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 अंत में पाप में गिर जाते हैं. आणि एक दुसऱ्यांसंगती संवाद करत 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 ते पापामध्ये पडतात. Beginning they will talk very politely and very decently, very humble also. शुरुआत में तो बातचीत बहुत ही नम्र रीति से, बहुत ही सुंदर रीति से, बहुत ही आदरणीय रीति से तो होता है. आणि सुरुवाताची जी वार्ता आहे ती अतिशय नम्रतेची आणि अतिशय चांगल्या रीतीने त्याच्या सुरुवात करतात. But lastly the end is they are falling in sin. किंतु बातचीत बढ़ते बढ़ते अंत में पाप में गिर पड़ते हैं. परंतु बोलत असता असता शेवट ते पापामध्ये पडतात. Malachi 2nd chapter 14 and 15 verse says, मलाकी की किताब दूसरे अध्याय के 14-15 वचन कहता है, मला की दुसरा अध्याय त्याचा 14 आणि 15 वचन असं म्हणतं, तुम्ही म्हणता असे का, कारण तुझ्यामध्ये व तुझ्या तारुण्यातल्या स्त्रीमध्ये परमेश्वर साक्षी आहे. ती तर तुझी सहकारणी व तुझी कराराची पत्नी असून तीच बरोबर विश्वासघाताने वर्तला आहेस. ज्याच्या ठाई आत्म्याचा थोडा तरी अंश आहे, अशा कोणीही असे कधी केले नाही. देवास अनुसरणाऱ्या संततीची इच्छा करणारा कोणी आहे काय? याकरिता आपल्या आत्म्याला जपावे व आपल्या तरुणपणाच्या पत्नीचा कोणी विश्वासघात करू नये. let none deal
treacherously against the wife. कोई भी अपने संगनी के साथ, अपने पत्नी के साथ धोखा के साथ काम नहीं करना। आणि कोणीही आपल्या पत्नी बरोबर विश्वासघात करू नये. Nowadays in the world, so many wives and so many husbands and so many young people, they are doing this type of the sin. आज इस संसार में देखने के समय में अनेक पत्नियां, अनेक पति, अनेक जवान एक दूसरे के प्रति विश्वासघात पाप करते हुए देखने पाते हैं। आणि आज आपण पाहतो की पुष्कळशा पत्नी, पुष्कळशे पती, पुष्कळशे तरुण जण एकमेकांबरोबर अशा प्रकारचा विश्वासघात पाप ते करत आहे. Men having their own wives, but same time keeping another girlfriends. मनुष्य के पास अपनी पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरे साथी को या दोस्त को वो बनाए रखा हुआ है। आणि एका माणसाकडे त्याच्या स्वतःची पत्नी असताना सुद्धा दुसऱ्या स्त्रीशी त्याचा संबंध असतं. Two couple came to our pastor who died. So they came and told that we have problems in our house. एक बार एक जोड़ा हमारे पास आए और पास्टर जी के पास इस प्रकार शिकायत की है कि हमारे परिवार में कुछ समस्याएं हैं। आणि एक विवाहिक जोडपं पास्टरजींकडे आलं आणि त्यांना म्हणाले आमच्या पारिवारिक जीवनामध्ये थोड्या समस्या आहे. That boy told that I have 4 girlfriends, my wife having the 4 boyfriends. और वो पति इस प्रकार पास्टर जी को शिकायत कर रहा है कि वैवाहिक जीवन के बावजूद भी मेरे और 4 लड़की दोस्त थे और उसी प्रकार मेरे पति के भी 4 लड़के दोस्त हैं। आणि तो जो पुरुष आहे त्या पास्टरांकडे अशी तक्रार करत आहे की लग्न झालं असताना सुद्धा माझ्या 4 मैत्रिणी आहे आणि माझ्या पत्नीचे 4 मित्र आहे. Dear child of God, because of your friendship, you are hearing the voice of men and you are fallen into the sin. परमेश्वर के प्रिय लोगों, दोस्ती यारी के पीछे जाते जाते ही मनुष्य की आवाज सुनते सुनते आप इस प्रकार के पाप के फंदे में फंसते गिरते चले जा रहे हैं। प्रियांनो, तुम्ही मैत्रीच्या बोलण्याच्या मागे जात जात अशा प्रकारे वागणूक करता आणि अशा रीतीने तुम्ही पापामध्ये पडले जाता. In one place, a girl refused to chat a young man. Boy killed her. और एक जगह में एक लड़की एक लड़के से बातचीत करने के लिए जब मनाही किया तो वो लड़के ने जाकर के उस लड़की का हत्या कर दिया. आणि एक ठिकाणी एका मुलीने एका मुलाशी बोलण्यासाठी तिने नाकारलं, यास्तव त्या मुलाने जाऊन तिचा घात केला. Dear child of God, don't make any friendship and destroy your life. परमेश्वर की प्रिय संतान, इस प्रकार के किसी भी मित्र भाव को आप लोग ना बनाइए, दोस्ती यारी ना कीजिए और अपने जीवन को विनाश ना करो. म्हणून यास्तव प्रियजनांनो, अशा प्रकारच्या कुठल्याही मैत्रिणी किंवा मित्र तुम्ही करू नका आणि तुमचा जीवाचा नाश करून घेऊ नका. When you see that some people are deceitful, chocolate and biryani and so many things they will give to them. और इस बात भी हम लोग और एक बात को देखने पाते हैं कि कई लोग धोखा के साथ कई प्रकार का चॉकलेट, कई प्रकार की बिरयानी, ऐसे अन्य अन्य वस्तु को ला करके धोखा देते हैं. आणि आपण पाहतो की काही लोक धोका देण्याकरिता चॉकलेट, बिर्याणी असे वेगवेगळे पदार्थ देतात. Proverbs 23rd chapter 6th verse says, नीति वचन 23वें अध्याय के 6 वचन में लिखा है, नीति सूत्र 23:6 वचनात असं लिहिलं आहे, eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats. जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना. दुष्ट दृष्टी मनुष्याचे अन्न खाऊ नको, त्याच्या मिष्टान्नाची इच्छा करू नको. Nowadays so many people doing the witchcraft in the food only. आज कई लोगों को भोजन वस्तुओं में जादू टोना करते हुए देखने पाते हैं. आज काही लोक जे जादू टोना करतात ते खाण्याच्या पदार्थात करतात. In Secunderabad, one young man, he studied well and he was a topper in the college. सिकंदराबाद में एक जवान लड़का है जो अपने कॉलेज में प्रथम स्थान या प्रथम श्रेणी में हमेशा रहता है और वो अपनी पढ़ाई को वो करता है. सिकंदराबाद या ठिकाणी एक मुलगा चांगला शिक्षण करतो, त्याच्या कॉलेजमध्ये तो प्रथम स्थानी येतो. His friends with love only, with love only gave the sweet and he ate. और उसके दोस्तों ने बड़े प्यार से उसको मीठा दिया
और इस बच्चे ने उस मीठे को खा लिया. त्याच्या मित्रांनी त्यांना मोठ्या प्रेमाने एक काहीतरी गोड पदार्थ दिलं, त्याचं त्यांनी सेवन केलं. After that, he fell in the sick, and boil came like a Job, and he suffered and died. और उसके बाद उसके शरीर में बीमारी आया. अयूब के मानिंद के शरीर में फोड़े हुए, फोड़े बढ़ता चला गया और वो चल बसा. आणि आपण पाहतो त्या लेकराला आजार झाला. इयोबाप्रमाणे त्याच्या शरीरामध्ये फोडे आले, फोडे येऊन त्रासला आणि आपण पाहतो तो त्याचा प्राण सोडून गेला. Dear child of God, in the last days you must be very careful. Deceitful food, deceitful drinks, giving to the people to kill them and destroy their life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, अंतिम दिनों में आप बहुत ही सावधान रहिए. धोखे के साथ खाने पीने की वस्तुओं को दे करके आपको विनाश करने के लिए कई लोग प्रयास करेंगे. प्रिय लोकांनो, या शेवटल्या दिवसामध्ये तुम्ही सावधान रीतीने राहा. तुम्हाला धोक्याने खाण्याच्या पदार्थामध्ये काही मिश्रून ते देतील तुमचा नाश करण्याकरिता. Don't hear their voice. Don't hear their loving voice. उनकी प्रेम से भरा हुआ चिकनी चुपड़ी बातों की ओर ध्यान न देना. त्यांची गोड व लागवी भाषेकडे तुम्ही लक्ष देऊ नका. One day, one boy going on loving somebody, but she is denied to him. और एक लड़का एक लड़की को बहुत ही प्यार करता था, लेकिन ये लड़की ने उसे मना कर दिया, इनकार कर दिया. आणि एक पोरगा एका पोरीवरती प्रेम करत होता, परंतु त्या मुलीने त्याला नाकारलं. He took a mobile photo and blackmailing her. और उसने उसके मोबाइल का फोटो लिया और उसको वो ब्लैकमेल करने लगा. आणि त्याने तिचा मोबाईल मध्ये एक फोटो घेतला आणि तिला तो ब्लॅकमेल करू लागला. Dear children of God, nowadays so many people, they are taking the photos and blackmailing so many young people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में बहुत सारे लोग इस प्रकार के छवि को लेते हुए अनेकों को ब्लैकमेल करते हुए हम लोग देखने पाते हैं. प्रियांनो, आजकाल अशा कितीतरी लोकांचे चित्र घेतात आणि त्यांचा ते ब्लॅकमेल करतात. When you read the Isaiah 2nd chapter 22 verse, यशायाह उसकी दूसरे अध्याय के 22 वचन को जब हम पढ़ेंगे, यशायाचं पुस्तक त्याचा दुसरा अध्याय त्याचं 22वे वचन. Isaiah 2nd chapter 22. यशायाह अध्याय 2 वचन 22. यशाया दुसरा अध्याय वचन 22. Cease ye from man whose breath is in his nostril, for wherein is he to be counted off. इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या. मनुष्याचे नावच घेऊ नको, त्याचा श्वास त्याच्या नाकपुड्यात आहे, त्याला काय जमेस धरावायचे आहे. Dear child of God, so many relatives only doing the witchcraft against their own people and destroying their lives. इन दिनों में अपने परिवार के कई लोग ही एक दूसरे के विरोध में जादू टोना करते हुए उनके जीवन को विनाश कर रहे हैं. आणि आज आपण पाहतो कुटुंबातले काही लोक एकमेकांविरोधामध्ये जादूटोना करतात, त्यांच्या जीवाचा ते नाश करतात. In the world we are seeing all these things. Don't believe the man's voice. इस प्रकार की बातें इन दिनों में संसार में हम देखने पाते हैं. इसके लिए मनुष्य की बातों की ओर ध्यान न देना, विश्वास न करना. जगामध्ये अशा सर्व गोष्टी आपण पाहत आहे, याकरिता मनुष्याच्या बोलण्याकडे, लागवी बोलण्याकडे तुम्ही लक्ष देऊ नका. When we go through the Bible, who are deceived by the man's voice? हम लोग धर्मशास्त्र में देखने के समय में ऐसे कई उदाहरण देखने पाते हैं जो मनुष्य के द्वारा धोखा पाए. शास्त्रामध्ये आपण असे कित्येक उदाहरण पाहतो ज्यांना मनुष्याच्या बोलण्याद्वारे धोका झाला. Genesis 3rd chapter 6th verse says, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 के 6 वचन में, उत्पत्तीचं पुस्तक 3रा अध्याय त्याचं 6वं वचन. he already heard the voice of the devil and fallen, and he brought one fruit and gave to the Adam. हवा पहले से शैतान की आवाज को सुनती है और उसके द्वारा वो फल को प्रेरित करके खा लेती है और उसके बाद वो फल को लेकर के आदम के पास लेकर के जाती है. हवाने सैतानाची वाणी ऐकून ते फळ घेतलं, ते फळ सेवन केलं. ते फळ सेवन केल्यानंतर ती आदामाकडे ते फळ घेऊन आली. And Adam believed his wife. और आदम ने अपनी पत्नी हवा को विश्वास किया. आदामाने आपली पत्नी हवेवर विश्वास ठेवला. After that he ate that fruit and disobeyed the commandment of the Father God's voice, and he
died in the spirit. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस रीति से आदम ने अपनी पत्नी की आवाज सुनने के कारण उसके सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, पाप में वो मर गया. आणि आपण पाहतो आदामाने त्याच्या स्त्रीचं बोलणं ऐकून ते फळ खाल्लं, त्याप्रमाणे त्याने परमेश्वराने दिलेल्या आज्ञेचं उल्लंघन केलं आणि ते मेले. आध्यात्मिक रीतीने त्यांचं मरण झालं. Secondly, we are seeing about the Esau. और दूसरा एसाव को हम देखने पाते हैं. दुसरं एसावाविषयी पाहतो. Genesis 25th chapter 32 and 33. 25 उत्पत्ति की किताब 25वें अध्याय के 32-33 वचन में. आणि उत्पत्ती 25 त्याचं 32 आणि 33 वचन. And Esau said, Behold, I am at the point of die, and what profit shall his birthright do to me? And Jacob said, Swear to me this day, and he swore unto him. उत्पत्ति की किताब 25वें अध्याय के 32 और 33 वचन. एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? और याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा. अतः उसने अपने शपथ खाई और अपना पहलौठों का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला. एसाव म्हणाला, हे पहा मी मरणमुक्त झालो आहे, मला आपल्या ज्येष्ठत्वाचा हक्काचा काय उपयोग? याकोब म्हणाला, तर आत्ताच्या आत्ता माझ्याशी शपथ व्हा. तेव्हा त्याने शपथ वाहिली, आपल्या ज्येष्ठत्वाचा हक्क याकोबास मोबदल्यामध्ये दिला. Jacob deceived his own brother with his deceitful words. और याकूब ने अपने भाई को धोखे की बातों से अपने भाई को उसने धोखा दे दिया. याकोबाने आपल्या भावाला धोक्याच्या बोलण्याने त्याला धोका दिला. Our own people will deceive us, don't forget that. हम इस बात को कभी ना भूलें, कई बार हमारे अपने ही लोग हमें धोखा देंगे. या गोष्टीला आपल्याला विसर नसो की आपलेच लोक आपल्याला बोलण्याने धोका देईल. Thirdly, we are seeing about the Samson. और तीसरे स्थान में शिमशोन को हम देखने पाते हैं. तिसऱ्या ठिकाणी शिमशोनाविषयी आपण पाहतो. Judges 16 chapter 16th verse says, न्याय का किताब अध्याय 16 वचन 16 कहता है. शास्त्रेचं पुस्तक 16 अध्याय त्याचं 16 वचन. Delilah says she pressed him daily with her words. और वहां पर लिखा है कि दलीला ने अपने शब्दों से बार बार हट किया, जिद्दी किया, उसके ऊपर दबाव डाला. आणि आपण पाहतो दलीलाने तिला वारंवार त्याच्याशी बोलू लागली आणि त्याने त्याच्यावरती दबाव टाकला. That time he vexed unto death. His soul vexed unto the death. और उस समय में वो उसका जीवन एक मृत्यु के वेदना में दिखाई दे रहा. आणि त्याच्यामुळे आपण पाहतो त्याचं जीवन मृत्यूच्या वेदनेत होतं. Dear child of God, this is happening nowadays in the world. इस संसार में इस प्रकार की बातों को होते हुए हम इन दिनों में देखने पाते हैं. जगामध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडत असताना आज आपण हे पाहतो. So many wives and husbands, so many young people, they're going on chatting in mobile. Lastly, because of their words, they vex unto death. और कई लोग इसी प्रकार उन लोग मोबाइल फोन में कंटिन्यूस बातें करने के कारण, चैटिंग करते करते रहने के कारण आखिरी में उनके नाक में दम हो जाता है. आणि आपण पाहतो की मोबाईल मध्ये वारंवार ते एकमेकांशी बोलतात आणि हे बोलणं जास्त झाल्यानंतर त्यांच्या नाकपुड्यामध्ये दम गुलटून येतो. So many people, they destroy themselves and they suicide also. इस प्रकार की परिस्थिति में कई लोग तो आत्महत्या कर बैठते हैं, कई लोग मर मिटते हैं. आणि अशा प्रकारे काही लोक आत्महत्या करतात आणि त्यांचा जीव संपवतात. When we read the First Kings 13 chapter 18th verse, जब हम लोग पहला राजा 13 अध्याय के 18 वचन को पढ़ते हैं. पहिले राजे त्याचा 13 अध्याय 18व्या वचनात पाहतो. First Kings 13 chapter 18th verse says, पहला राजा 13 अध्याय के 18 वचन कहता है. पहिले राजा 13:18 मध्ये असं पाहतो. he said unto him, I am a prophet also. और उसने उससे कहा कि देख, जैसा तू नबी है वैसा मैं भी एक नबी हूं. तेव्हा तो त्यास म्हणाला, मी तुझ्यासारखाच एक संदेष्टा आहे. An angel spake unto me by the word of the Lord. और मुझसे दूत ने यहोवा के वचन आकर के कहा. परमेश्वराच्या आज्ञेवरून एक दूताने मला म्हणाला. But
that old prophet deceived the young prophet. लेकिन वहां पर घटनाक्रम को देखने के समय में एक बूढ़ा भविष्यवक्ता ने एक जवान भविष्यवक्ता को धोखा दिया. परंतु तिथलची घटना पाहत असताना आपल्याला कळतं एक वृद्ध संदेष्टाने तरुण संदेष्टाला धोका दिला. God told to the young man not to go to anywhere, you have to go to straight. और परमेश्वर ने उस नबी को यह कहकर के आज्ञा दिया था कि तू इस मार्ग में कहीं पर भी ठहरना नहीं, तू इसी रास्ते में निकल करके चले जाना. आणि परमेश्वराने त्या संदेशाला सांगितलं होतं तुझ्या मार्गामध्ये इकडे तिकडे किंवा कुठे थांबू नको, तू सरळ निघून जा. But he denied, he disobeyed the voice of God, and he went along with the old prophet, and he ate and drank. After that he killed by line. लेकिन ये भविष्यवक्ता जाने के रास्ते में एक बूढ़ा दूसरा भविष्यवक्ता आकर के उसको धोखा दे करके अपने घर में ले गया और उसने आज्ञा उल्लंघन किया. उसके घर में बैठ करके खाया पिया और जब यात्रा में आगे बढ़ा तो जाने के रास्ते में एक सिंह ने उस भविष्यवक्ता को मार दिया. आणि आपण पाहतो या सिंहाने या ज्या संदेष्टाने आज्ञाचं उल्लंघन केलं त्या वृद्ध संदेष्टाबरोबर जाऊन त्यांनी खाणं पिणं केलं. खाऊन पिऊन जेव्हा तो पुढे निघाला त्याच्या प्रवासामध्ये एका सिंहाने त्याला फाडून खाल्लं. I am giving the suggestion to all the believers, very careful. So many workers are in the world. They will call you, they will say that God told me like that, and deceive you. Lastly you will destroy your own life. एक सलाह मैं सारे विश्वासियों को देने जा रहा हूं. अनेक प्रकार के सेवक लोग इस संसार में हैं, वे आकर के इस प्रकार कहेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये कहला भेजा है, और आप उनकी बातों को सुनकर उनके पीछे जाने से आखिर में धोखा ही पाओगे, धोखा ही खाओगे. आणि आज मी तुम्हा सर्व विश्वासणाऱ्यांना चेतावणीच्या द्वारे ही गोष्ट सांगत आहे की कित्येक सेवक जण तुमच्याकडे येतील, ते तुम्हाला म्हणतील की परमेश्वराकडून मला ही गोष्ट तुझकरिता प्राप्त झाली. तुम्ही त्या गोष्टी ऐकून त्यांच्या मागे जाऊ नका, तुम्हाला शेवट धोका मिळेल. All the workers also very careful about the senior workers. If they won't tell in the spirit, you have to judge righteously, rightly. उसी प्रकार सारे सेवक लोग भी अपने जीवन को अच्छे से परख करके देखे. जब एक वरिष्ठ सेवक आपसे कुछ बातें कहता है, आत्मा में उसको परख करके देखना कि क्या वो सही है या नहीं. यास्तव सेवकांनी पण या गोष्टी पारखून पाहाव्या. वरिष्ठ सेवकांनी जर तुम्हाला कोणची गोष्ट बोलली तर आत्म्यामध्ये त्याचं परीक्षण तुम्ही करा. But you have to obey the leaders according their leading. और उसी समय में आपकी अगुवाई करता जिस रीति से आपको अगुवाई करते हैं, आप उसकी आज्ञाकारी होना है. परंतु त्याच समय तुमचे मार्गदर्शन करणारे जे मार्गदर्शक आहे त्यांच्या आज्ञेचं तुम्ही पालन करावं. Genesis 27 chapter 22 verse says, और उत्पत्ति की किताब के 27वें अध्याय के 22 वचन में, आणि उत्पत्ती 27वा अध्याय 22वा वचन, Isaac says that the voice is a Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. और वहां पर इसहाक ने इस प्रकार कहा कि तेरी आवाज सुनने से तो याकूब की मानिंद सुनाई देता है, लेकिन तेरे हाथ को छूने से तू एसाव की मानिंद दिखाई दे रहा है. आणि तिथं तो म्हणतो वाणी तर याकोबाची पण हात तुझे स्पर्श केले तर एसावासारखे ते लागत आहे. So many parents, so many elders, they may be blind, but they are deceived by so many people. और कई माता पिता, कई अभिभावक लोग, कई बड़े बुजुर्ग लोग, जब उनकी आंखों की रोशनी चले जाता है, कईयों के द्वारा वे लोग इस रीति से धोखा पाते हैं. आणि आपण पाहतो काही जण आहेत, काही वृद्ध लोक आहेत, जेव्हा त्यांच्या नेत्रांची दृष्टी मंदावते तेव्हा पुष्कळांद्वारे त्यांना धोका देण्यात येतो. That's why we have to come to our Lord Jesus Christ. यही कारण है कि हमें चाहिए हमारी यीशु मसीह के पास हम आए. आणि वास्तव आपण एक काम करावं, आपण आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ता जवळ यावं. John 10 chapter 27 verse says, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 के 27 वचन में लिखा है, योहान 10 अध्याय त्याच्या 27 वचनात लिहिलं आहे, My sheep hear my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेंगे. माझी मेंढर माझी वाणी ऐकतात. I know them and they follow me. वे मेरी आवाज को जानती है और वो मेरे पीछे हो लेती हैं. मी ते माझे आवाज ओळखतात आणि माझ्या मागोमाग ते येतात. Tonight what Lord Jesus Christ said, आज की रात प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? आजची रात्र प्रभू येशू ख्रिस्त काय म्हणतो? Mark 1 chapter 15
17th verse says, मार्कुस सुसमाचार अध्याय 1 का 15 वचन में, मार्कचं पुस्तक पहिला अध्याय 15 वचन. this is the voice of the Lord Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह की वाणी है. प्रभू येशू ख्रिस्ताचे वाणी आहे. And saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो. काळाची पूर्णता झाली आहे व देवाचे राज्य जवळ आले आहे. पश्चाताप करा व सुवार्तेवरती विश्वास ठेवा. According the word of God, everything going to end now. You have to repent and come to the Lord Jesus Christ and save your soul. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार ही इस संसार में सारी बातें घटने जा रही है. आपके बचाव के लिए चाहिए कि मन फिराओ और परमेश्वर की वाणी की ओर ध्यान दो. प्रिय देवाच्या लेकरांनो, देवाच्या वचनानुसार या जगामध्ये सर्व काही गोष्टी समाप्तीवर आलेल्या आहेत. यास्तव तुम्ही पश्चाताप करा. परमेश्वराच्या वचनानुसार त्याच्या समीप तुम्ही या. John 14 chapter 6 verse says, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 वचन में यीशु कहता है, योहान 4 त्याचा 14 वचनात येशू असं म्हणतो. Jesus saith unto him, I am the way and the truth and the life. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 वचन में यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हो. योहानाचं पुस्तक त्याचा 14 अध्याय 6व्या वचनामध्ये येशू म्हणतो, मार्ग, सत्य व जीवन मीच आहे. No man can cometh unto the Father but by me. बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता. माझ्याद्वारे आल्या वाचून पित्याकडे कोणीही येत नाही. Dear child of God, Jesus Christ is the way to go to heavenly place. परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करने के लिए यीशु ही वह मार्ग है. प्रिय लोकांनो, स्वर्गीय स्थानामध्ये पोहोचण्याकरिता प्रभू येशू ख्रिस्त हा केवळ मार्ग आहे. He died on the cross and shed his precious blood for mankind. और उसने कलवरी क्रूस पे अपने प्राण को दिया और सारे मानव जाति के लिए अपने लहू को बहा दिया. वधस्तंभावरती त्यांनी आपला प्राण अर्पिला. सर्व मानव जाती करिता त्यांनी आपलं रक्त वाहिलं. John 5th chapter 24th verse says, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 24 वचन में, योहानाचं पुस्तक त्याचा 5वा अध्याय वचन 24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation. मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती. मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, जो माझे वचन ऐकतो आणि ज्याने मला पाठविले त्याच्यावर विश्वास ठेवतो, त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त झाले आहे आणि त्याच्यावरती न्यायाचा प्रसंग येणार नाही. But he is passed from death unto life. परंतु वो मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है. परंतु तो मृत्यूपासून जीवनामध्ये पार गेला आहे. After that we have to hear the voice of Lord Jesus, and according the word of God we have to take the water baptism. इसके पश्चात हमें चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हुए पानी के बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पण करें. त्याच्यानंतर प्रभू येशूच्या वाणीकडे आपण कान द्यावं व पाण्याच्या बपतिस्मेकरिता आपण समर्पण करावं. Lord Jesus told to John the Baptist to be so now, for thus is becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. और प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को देखकर किस प्रकार कहा, ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से हमें सारी धार्मिकता के कामों को पूरा करना उचित है. बपतिस्मा देणाऱ्याला योहानाकडे पाहून येशू ख्रिस्त म्हणाला, या सर्व गोष्टी अशाच प्रकारे होऊ दे, कारण का अशाच प्रकारे होणं उचित आहे. After that you have to receive the Holy Spirit. इसके पश्चात हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाएं. त्याच्यानंतर आपल्याला आवश्यकता आहे ती म्हणजे पवित्र आत्म्याची. John 4 chapter 24th verse says, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 24 कहता है, योहना 4 त्याचं 24व वचन. God is a spirit, and they that worship him must worship him in the spirit and in truth. परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा
आत्मा और सच्चाई में आराधना करे। देव आत्मा आहे आणि त्याची उपासकांनी त्याची उपासना आत्म्याने व खरेपणाने केली पाहिजे. One more word Lord Jesus Christ told. एक और बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अजून एकदा प्रभु येशू ख्रिस्त म्हणाला, John 7 chapter 38 verse, you have to receive, believe the Lord Jesus Christ and receive the Holy Spirit. यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 38 वचन में यीशु ने कहा कि यीशु मसीह को विश्वास करते हुए आप उस पवित्र आत्मा के शक्ति को प्राप्त करना चाहिए. योहान त्याचा 7वा अध्याय 38 वचनामध्ये प्रभु येशू ख्रिस्त अशा प्रकारे म्हणतो, आपण त्याच्यावरती विश्वास ठेवावा व पवित्र आत्मा प्राप्त करावा. Luke 13 chapter 24th verse says, लूक रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 24 कहता है, लूक 13 अध्याय त्याचं 24व वचन, strive to enter into the straight gate. संकीर्ण द्वार के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रयास करो. अरुंद दरवाजातून आत जाण्यासाठी तुम्ही यत्न करा. For many I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. क्योंकि कई लोग उसमें प्रवेश करने के चाहेंगे पर ना कर सकेंगे. कारण का मी तुम्हाला सांगतो, पुष्कळ लोक आत जाण्यास पाहतील परंतु त्यांना जाता येणार नाही. Christian life is a narrow way. मसीही जीवन एक संकीर्ण मार्ग है. आणि ख्रिस्ती जीवन म्हणजे अरुंद मार्ग आहे. Dear child of God, you have to strive in through that gate. इस मार्ग में, इस द्वार में प्रवेश करने के लिए आपको प्रयत्न करना है. आणि या द्वारातून आत जाण्याकरिता, या मार्गातून पुढे जाण्याकरिता तुम्हाला परिकाष्ठा करावं लागेल. If you want to go through this straight gate, you have to hear the voice of God. अगर आप इस संकीर्ण द्वार में प्रवेश करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप ईश्वर की आवाज को सुने. या अरुंद मार्गातून जर तुम्हाला आत जायचं असेल तर तुम्ही एक गोष्ट करावी, ती म्हणजे देवाची वाणी तुम्ही ऐकणे. Isaiah says that one voice coming from behind, this is the way you have to go through. यशायाह भविष्यवक्ता इस प्रकार कहता है कि एक आवाज मैंने पीछे से सुना, मार्ग यही है, इसी पे तुम चलो. यशायाह संदेष्टा असं म्हणतो की त्याच्या मागून त्याला एक वाणी अशी ऐकू आली, हाच तो मार्ग, इथून तू पुढे जा. That's why Hebrews 3rd chapter 7 and 8 verse says, यही कारण से इब्रानी की पत्री 3 अध्याय के 7 और 8 वचन में, यास्तव इब्रिकरास पत्र 3 अध्याय 7 आणि 8 वचन, Hebrews 3rd chapter 7 and 8. इब्रानी की पत्री अध्याय 3 वचन 7 और 8. इब्रिकरास पत्र 3 अध्याय वचन 7 आणि 8. Read. यावरून पवित्र आत्मा म्हणतो, त्याप्रमाणे आज जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल तर रानातील परीक्षेच्या दिवशी इस्रायल लोकांनी चीड आणली होती तशी तुम्ही आपली मने कठीण करू नका. सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था. Whatever Holy Spirit says, if you obey that voice, you will save your soul. जो भी कुछ पवित्र आत्मा आपसे कहता है, अगर आप उसके आज्ञाकारी होंगे तो आपका प्राण बच जाएगा. आणि जे काय पवित्र आत्मा म्हणतो त्याच्या आज्ञेचं तुम्ही पालन केले असता तुमचा प्राण वाचला जाईल. Our God is a living God. हमारा परमेश्वर जीविता ईश्वर है. आपला परमेश्वर जिवंत देव आहे. God is one and all people are worshipping God. एक परमेश्वर है और सब उस ईश्वर को आराधना करते हैं. एकच तो परमेश्वर व सर्वजण त्याची उपासना करतात. Our God is a live God. He will speak with you daily. हमारा परमेश्वर जीविता परमेश्वर है, प्रतिदिन वो आपसे बात करेगा. आपला परमेश्वर जिवंत परमेश्वर आहे, दररोज तो तुम्हा बरोबर बोलील. Every evening, cool of the day, Lord come down from heaven and speak with the Adam. हर एक दिन के ठंडे समय में प्रभु परमेश्वर उतर करके आदम से बातचीत किया करता था. प्रति दिवस दिवसाच्या शिळोपाच्या वेळी परमेश्वर खाली येऊन आदमाबरोबर बोलत होता. So many in the Old Testament days, so many saints and prophets and kings like David all heard the voice of God. पुरातन समय में, पुरातन काल में, दिनों में बहुत सारे परमेश्वर के संत लोग, भविष्यवक्ता लोग, राजा दाऊद के समान कई राजा लोग ईश्वर की आवाज को साक्षात सुना. जुन्या करारामध्ये आपण पाहतो कित्येक संतगण,
कित्येक संदेष्टे दावीद राजासारखे कित्येक राजांनी परमेश्वराची वाणी हुबेहूब ऐकली. But some of the people of God and Israelites, they hardened their hearts. लेकिन कुछ परमेश्वर के लोग, इस्राएल के संतानों में से कुछ लोगों ने अपने हृदय को ईश्वर की आवाज के प्रति कठिन कर दिया. परंतु देवाचे लोक म्हटल्याने इस्रायल लोकांमधून काही लोकांनी देवाच्या वाणीकरिता आपलं अंतःकरण कठीण केले. God will speak in different ways. परमेश्वर अलग अलग रीति से बातें करेगा. परमेश्वर निरनिराळ्या रीतीने बोलतो. But so many times we are not understanding, but we are hard in our hearts. कई बार परमेश्वर की आवाज को हम समझ नहीं पाते, किंतु हम उसके विपरीत हमारे हृदय को कठिन कर बैठते हैं. कधी कधी आपण देवाची वाणी ओळखून घेत नाही, परंतु त्याच्या विरोधात आपण आपलं हृदय कठीण करतो. The voice of the Lord is like a thunder. परमेश्वर की आवाज एक बिजली के कड़कने के समान. आणि परमेश्वराची वाणी वीज जशी कडकते तशी आहे. The voice of the Lord is a powerful. परमेश्वर की आवाज सामर्थी है. परमेश्वराची वाणी सामर्थ्यशाली आहे. The voice of the Lord full of the majesty. परमेश्वर की आवाज सारे प्रताप से भरा हुआ. परमेश्वराची वाणी प्रतापशाली आहे. When you go and read the Psalm 29, 3 to 9 and 11th verse, भजन संगीता 29 के 3 से 9 और 11 वचन को अगर आप पढ़ करके देखोगे, स्तोत्र संहिता 29 त्याच्या 3 ते 9 वचनापर्यंत तुम्ही वाचल्यास there we are seeing that how God's voice. वहां पर ईश्वर की आवाज कैसा है आपको वहां पर पढ़ने से पता चलेगा. येशूची वाणी कशा प्रकारे आहे त्या ठिकाणी वाचल्याने तुम्हाला कळून येईल. That's why we have to understand His voice and obey His voice. इसी के लिए हमें चाहिए कि हम उसकी आवाज को सुने, समझे और उसकी पालन करें. यास्तव आपण त्याची वाणी ऐकावी, ती समजून घ्यावी, त्या अनुसार आपण पालन करावं. Now in the Old Testament period, how God spoken through His voice. और अब हम देखेंगे कि पुरातन नियम में किस रीति से परमेश्वर ने लोगों से बातें किया. जुन्या करारामध्ये आपण पाहूया परमेश्वराने लोकांशी कसा बोलला. First of all, we are seeing सबसे पहले सर्वात प्रथम there we are seeing that out of the mountain God spoken with them. परमेश्वर पुरातन नियम में पहाड़ के ऊपर से या पर्वत के ऊपर से लोगों से बातें किया. जुन्या करारामध्ये आपण पाहतो की परमेश्वर पर्वताच्या टोकावरती जाऊन तो मनुष्याशी बोलत होता. Exodus 19 chapter 3rd verse says, निर्गमन की किताब अध्याय 19 वचन 3 में लिखा है. आणि निर्गमाचं पुस्तक 19वा अध्याय त्याचं 3रं वचन. and Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain. तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत से उससे पुकार कर कहा. तेव्हा मोशे देवाकडे वर गेला आणि परमेश्वराने त्याला पर्वतावरती हाक मारून सांगितले. He spoken with the Moses all the commandments and statutes towards the children of Israel. और परमेश्वर ने मूसा को पर्वत के शिखर के ऊपर सारी व्यवस्था को, विधियों को जो इस्राएलियों के निमित्त होना चाहिए बता करके दिया. परमेश्वराने मोशेला पर्वताच्या वरती बोलवून इस्रायल लोकांकरिता असणारे सर्व नियम, सर्व कानून त्यांनी त्याला दिले. Dear child of God, how can God speak with you? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपसे परमेश्वर कैसे बात करेगा? प्रिय देवाच्या लेकरांनो, परमेश्वर तुझ्याशी कसा बोलणार? Mountain means prayer life. ये पर्वत का अनुभव बोलने से प्रार्थना का अनुभव है. पर्वत म्हटल्याने प्रार्थनाचा अनुभव दर्शवतं. Luke 6 chapter 12th verse says, लूक रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 12 कहता है. लुकाचं पुस्तक 6 अध्याय वचन 12 म्हणतं. and it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray. और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया. आणि त्या दिवसामध्ये तो डोंगरावरती प्रार्थना करण्याकरिता गेला. And continue all night in prayer to God. और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई. आणि परमेश्वरासंगती प्रार्थना करण्याकरिता अख्खी रात्र त्यांनी घालवली. Dear child of God, through prayer life only you can hear the voice of God. परमेश्वर की प्रिय संतान, प्रार्थना में जीवन के द्वारा ही आप ईश्वर की आवाज या उसकी वाणी सुनने पाओगे. प्रिय देवाच्या लेकरांनो, प्रार्थनामय जीवनाच्या द्वारे
परमेश्वराची वाणी त्याचा आवाज तुम्हाला ऐकण्यासाठी येईल. What is the relation between God and us? हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या संबंध है? परमेश्वरामध्ये आपणामध्ये काय संबंध आहे? What type of the relation we have with our God? हमारे परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध है? आणि आपल्या परमेश्वराबरोबर आपला संबंध तो काय? The relationship between the son and father. एक पिता एक पुत्र के बीच का संबंध ही हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध है. जसं एका पित्याचं त्याच्या मुलाबरोबर नातं असतं त्याप्रमाणे आपलं नातं आपल्या परमेश्वराबरोबर आहे. Secondly, the relationship between the wife and husband. दूसरी रीति में देखने के समय में एक पति पत्नी के मध्य में जिस प्रकार का संबंध, वैसे ही हमारे ईश्वर के साथ हमारा नाता. दुसरं आपण पाहतो जसं एक पती व पत्नीमध्ये त्यांचं नातं असतं त्याचप्रमाणे आपलं नातं परमेश्वराबरोबर आहे. Relationship between the king and people. तीसरा, एक राजा और प्रजा के मध्य में जिस प्रकार का संबंध, एक वैसा ही संबंध हमारे ईश्वर के साथ हमारा. आणि तिसरं म्हटल्याने जसं एका राजाचं व त्याच्या लोकांचं नातं असतं त्याप्रमाणे आपल्या परमेश्वराबरोबर आपलं नातं आहे. Dear child of God, we are not stranger to our God. We are not far away from our God. We are very close relative with our God in prayer life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे ईश्वर के लिए हम लोग एक परदेशी नहीं, हमारे ईश्वर परमेश्वर के लिए हम एक दूरवासी नहीं, किंतु हम प्रार्थनामय जीवन के द्वारा हम बहुत ही समीप, हम ईश्वर के बहुत ही नजदीक है. प्रियांनो, आपण परमेश्वराबरोबर दूर असू नये, परमेश्वरापासून आपण लांब गेलेलो असू नये, परंतु आपण आपल्या प्रार्थनामय जीवनाद्वारे आपण परमेश्वराच्या अगदी समीप असावं. All the Old Testament saints, especially Moses and David and all other saints, they spoken with God and hear the voice of God. पुरातन नियम के बहुत सारे संत, विशेष करके मूसा और दाऊद के समान अनेक लोग परमेश्वर से मुखामुख सीधे बातें किया करते थे. जुन्या करारामध्ये दावीद राजाप्रमाणे, मोशेप्रमाणे आपण असे अनेक लोक पाहतो ज्यांनी परमेश्वरासमोर समोरासमोर त्याच्याशी त्यांनी संवाद केला. If God spoken with the Old Testament saints, why not God spoken with you and me? अगर पुरातन नियम के लोगों के साथ परमेश्वर ने बातें किया, तो आपको और मेरे साथ परमेश्वर क्यों ना बात करेगा? जुन्या कराराच्या लोकांबरोबर जर देवाने अशा प्रकारे वार्ता केली तर आज तुझ्या बरोबर माझ्या बरोबर तो का नाही बोलणार? Secondly, in Old Testament days, God will speak with the people of God from the door of the tabernacle. पुरातन नियम में देखने के समय में परमेश्वर कहां से कैसे बातें करता है देखने के संबंध में तंबू के द्वार से परमेश्वर लोगों से आलाप करता था. जुन्या करारामध्ये आपण पाहतो परमेश्वर लोकांसंगती कुठून बोलत होता तर त्या तंबूच्या द्वारापासून लोकांबरोबर तो वार्ता करत होता. Exodus 29 chapter 42 verse. 29 नीति वचन, निर्गमन की किताब 29 के 42 वचन को पढ़ने के समय में, आणि निर्गमन त्याचं 29 त्याच्या 42, This shall be a continual burnt offering throughout your generation at the door of the tabernacle of the congregation. तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे. दर्शन मंडपाच्या दाराशी परमेश्वरासमोर तुम्ही पिढ्यानपिढ्या अशाच प्रकारे होम अर्पण नित्य अर्पावे. The God says that where I will meet you to speak there unto thee. और परमेश्वर उससे कहता है कि उस स्थान जिससे तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा और वहां से मैं बातें करूं. या स्थळी तुझ्याशी बोलण्यासाठी मी तुम्हाला भेटेन असं परमेश्वर म्हणतो. Door of the tabernacle, what it shows. मिलाप वाले तंबू का द्वार क्या दिखाता है? दर्शन मंडपाचं द्वार काय दर्शवतं? Assembly of church. और ये कलीसिया को दिखाता है. परमेश्वराची मंडळी दर्शवतं. Speak by the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करने वाला अनुभव. परमेश्वराच्या वचनाद्वारे बोलणारे त्याचे लोक. Dear child of God, every convention, every Sunday meeting, God going on speaking with you. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हर एक सम्मेलन में, हर एक रविवारी आराधना में परमेश्वर सभा में वचन के द्वारा आपसे बातें करता है. प्रिय लोकांनो, प्रत्येक संमेलनामध्ये, प्रत्येक शब्दात दिवशी सभेमध्ये परमेश्वर त्याच्या लोकांबरोबर त्याच्या वचनाद्वारे बोलतो. The word of God will speak with you continually every day, every moment. परमेश्वर का वचन लगातार निरंतर आपके
आपके साथ बातें करते रहेगा. देवाचं वचन सर्वदा व सर्व काळ तुमच्याशी बोलत राहील. Especially you have to read the word of God day and night, that will speak with you. विशेष करके दिनों रात परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना है, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा. ही अस्तव दिवस आणि रात्र तुम्ही देवाचं वचन वाचन करावं, ठेवा, तो तुमच्याशी बोलेल. Thirdly, God will speak with the in the Old Testament, the midst of the two cherubims. और तीसरे स्थान में देखने के समय में करूबों के मध्य में रहते हुए परमेश्वर पुरातन नियम में लोगों से बात किया करता था. आणि तिसरं आपण पाहतो करुबांच्या मध्ये असून परमेश्वर त्याच्या लोकांशी बोलत होता. Exodus 25th chapter 22 verse says, और निर्गमन की किताब के 25वें अध्याय के 22वें वचन में निर्गमाचं पुस्तक 25वा अध्याय त्याचं 22व वचन. and there I will meet with thee, and I will communion with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims. और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इस्राएल के लिए जितनी आज्ञाएं तुझको देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे मैं तुझसे वार्तालाप किया करूंगा. तेथून तुला मी भेटत जाईन आणि इस्रायल लोकांसाठी ज्या काही गोष्टींसंबंधाने मी तुला आज्ञा देणार आहे त्या सर्व विषयी मी दयासनावरून व साक्षपटाच्या कोशावरून दोन्ही करुबांमधून तुझ्याशी मी बोलत जाईल. All the things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. इस्राएलियों के लिए जितनी भी आज्ञा मुझे देनी है. आणि इस्रायल लोकांना ज्या आज्ञा मला द्यायच्या आहे What it means? इसका अर्थ क्या है? त्याचा अर्थ काय? God speak through servants of God. और इस दो करूबों के मध्य से आज्ञा देने वाला परमेश्वर की बातें करने का अर्थ परमेश्वर सेवकों के द्वारा हमसे बातें करेगा. दोन करुबामधून परमेश्वर बोलण्याचा अर्थ परमेश्वर त्याच्या संत गणांद्वारे आपणाशी बोलतो. Cherubims means it is comparable to the servants of God. यहाँ पर करूबिम लोग जो हैं वो संतों के साथ या सेवकों के साथ तुलनात्मक रीति में दर्शाया गया. आणि या ठिकाणी करूब म्हटल्याने संतगण किंवा सेवकांबरोबर त्यांची तुलना आहे. What is the fourth one? चौथा अनुभव क्या? चौथा अनुभव काय? Midst of the throne God will speak. पुरातन दिनों में परमेश्वर सिंहासन से बातें किया करता था. शून्य करारामध्ये राजासनामधून परमेश्वर बोलत होता. In the New Testament God will speak through the apostle. नया नियम में परमेश्वर प्रेरितों के माध्यम से बातें करेगा. नवीन करारामध्ये परमेश्वर प्रेषितांद्वारे बोलतो. Now fourth one we are meditate about the midst of the throne, Revelation 4th chapter 5th verse. प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 के 5 वचन में सिंहासन के मध्य से देखो वो बातें करता है. प्रकटीकरण 4 अध्याय त्याच्या 5व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की पहा राजासनाच्या इथून तो आपणाशी बोलतो. And out of the throne proceeded lightning and thunders and voice. और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जनें निकलती है. उस सिंहासन के सामने आग और दीपक जल रहे हैं और वो परमेश्वर वहां से बातें कर रहा है. त्या राजसनाच्या आतून विजा वाणी आणि मेघ गर्जना निघत होत्या. And there were 7 lamps of a fire burning before the throne. और सिंहासन के सामने आग के से 7 दीपक जल रहे हैं. आणि आपण पाहतो पेटलेल्या 7 मशाली राजसनापुढे जळत होत्या. Which are the 7 spirits of God. और वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं. ते देवाचे 7 आत्मे आहे. Here God speaks means being led by the Holy Spirit. और यहाँ पर परमेश्वर बातें करने का तात्पर्य है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है. या ठिकाणी परमेश्वर आपणाशी बोलतो त्याचा अर्थ पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तो बोलतो. But God spoken with the people of God directly by the voice of God. परमेश्वर सीधे सीधे अपने वचन के द्वारा लोगों से बातें किया. परमेश्वराने सरळ सरळ त्याच्या लोकांबरोबर वचनांद्वारे तो बोलला. Dear child of God, secondly through Jesus Christ, the word of God, God spoken with us. दूसरा परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने हमसे बातें किया. दुसरी गोष्ट प्रिय देवाच्या लेकरांनो, येशू ख्रिस्ताच्या वतीने परमेश्वर आपणाशी बोलला. Now God going on speaking with us through the Holy Spirit. लेकिन इन दिनों में पवित्र आत्मा के माध्यम से निरंतर लगातार परमेश्वर हमसे बातें करता है. परंतु आज वर्तमान समयी परमेश्वर पवित्र आत्म्याच्या द्वारे सदैव आपणाशी तो बोलत आहे. But dear children of God, when you sin against God, that time you can't hear the voice of God. लेकिन उसी समय में परमेश्वर की प्रिय संतान, अगर आप ईश्वर के विरोध में पाप करोगे उसकी वाणी सुनने ना
पाओगे। परंतु त्याच समय प्रिय देवाच्या लेकरांनो, जर तुम्ही पाप केल्याने देवाची वाणी तुम्हाला ऐकण्यास येणार नाही. First of all, we are seeing about the Adam. सबसे पहले उदाहरण आदम का उदाहरण। आणि पहिलं उदाहरण आपण आदामाचं पाहिलं. Adam having the fellowship with God. आदम का परमेश्वर के साथ बहुत ही सुंदर संगति था, सहभागिता था। आणि आदामाचं आपण पाहतो परमेश्वराबरोबर चांगले त्याचे संबंध, त्याचं नातं होतं. Genesis 3rd chapter 8 verse says, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 8 कहता है, उत्पत्तीचं पुस्तक 3 अध्याय 8 वचन म्हणतं. and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के 8 वचन में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। यानंतर शिळोपाचा वारा सुटला असता परमेश्वर देव बागेत फिरत होता. But when they sinned against God, they hid themselves behind the tree. लेकिन जब वे इन्होंने पाप किया, वे लोग जाकर के एक झाड़ के पीछे छिप गए। परंतु जेव्हा त्यांनी पाप केलं, त्यांनी आपल्या स्वतःला एका झाडामागं लपविलं. Like that, so many Old Testament people, when they sin against God, they are unable to speak with God. उसी प्रकार पुरातन में कई संतों को हम देखने पाते हैं कि वे लोगों ने जब ईश्वर के विरुद्ध में पाप किए, वे लोग परमेश्वर की आवाज सुनने नहीं पाए। आणि जुन्या करारामध्ये आपण असे संतगण पाहतो, जेव्हा त्यांनी देवाच्या विरुद्ध पाप केलं, देवाची वाणी ते ऐकू शकले नाही. When Saul sinned against God and disobeyed the voice of God and word of God, जब राजा साउल ने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया, उसके वचनों को उसने नकार दिया। राजा शाऊलाने जेव्हा देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन केलं, त्याच्या वचनाचा जेव्हा त्यांनी नाकार केला, that time he lost his Holy Spirit. उस समय में राजा अपना अभिषेक खो दिया। त्यावेळी राजाने आपला अभिषेक गमावला. Now he is seeking for the voice of God. अभी वो ईश्वर की आवाज सुनने को तरस रहा है, ढूंढ रहा है। आणि आता परमेश्वराची वाणी ऐकण्याचा तो शोध घेत आहे. Samuel also died, शामुएल देखो मर गया, शमूएल मेला. but he is not getting any counsel from any person. अभी उसको परमेश्वर की ओर से कोई सलाह देने वाला नहीं। परंतु परमेश्वराच्या वतीने त्याला सल्ला देणारा कोण नव्हता. And he went to the woman of the witchcraft and told her that call the Samuel that I want the counsel. और राजा साउल को जब सलाह देने वाला कोई न मिला, तो एक भुतड़ी स्त्री के पास जाकर के कहा कि तू सामुएल को बुला कि मैं उससे सलाह ले सकूं। आणि आपण पाहतो की त्यावेळी त्याला सल्ला देण्यासाठी कोणी मिळालं नाही, तेव्हा तो त्या जादूटोणा करणाऱ्या त्या बाईकडे जाऊन तिला बोलावलं. Sad to say, so many children of God nowadays they are denying the Almighty God and going to the witchcraft people. दुख के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि आज अनेक ईश्वर के संतान परमेश्वर के सबक में उसकी आवाज सुनने के बजाय अनेक प्रकार के जादू टोना के पीछे उलझ जाते हैं। आणि आज दुःखाची गोष्ट आहे की परमेश्वराचे लेकरं परमेश्वराची वाणी ऐकण्याऐवजी ते जादूटोणा करणाऱ्या लोकांकडे जातात आणि त्यांच्याकडे ते जाऊन ऐकतात. Dear child of God, God is God, Almighty God. He will speak. Our saints going on encouraging you to fill in the Holy Ghost. यही कारण है कि हमारे संत बार-बार आपको उत्तेजना करते हुए कहते हैं, आत्मा में भरो, अन्य भाषा में बातें करो। यास्तव आमचे संतगण तुम्हाला सदैव सांगतात व तुम्हाला उत्तेजित करतात, आत्म्यामध्ये भरा, अन्य भाषेमध्ये बोला. Samson also lost his Holy Spirit. शिमशोन भी अपने शक्ति, अपने अभिषेक को नष्ट कर बैठा। शिमशोनाने सुद्धा आपला अभिषेक गमावून बसला. He lost his vision. उसने अपने दर्शन को नष्ट कर दिया। त्यांनी आपलं दर्शन गमावलं. Now he is in the slave of in the enemies. अभी शत्रु का गुलामी की अवस्था। शत्रूच्या गुलामीत तो आहे. Dear child of God, if you lost the Holy Spirit, you will in the hands of the enemy. परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप आपके अभिषेक को नष्ट कर बैठोगे, आप आपके शत्रु के हाथ फंस जाओगे। प्रियांनो, जर तुम्ही तुमचा अभिषेक गमावून बसला, तुमच्या शत्रूंच्या हातात तुम्ही जाऊन पडता. Every time God used to speak with me that you fill in the Spirit and resist the enemy and overcome the devil. हर एक दिन परमेश्वर मुझसे बातें करते हुए कहता है कि आत्मा में भरते हुए शैतान का सामना करो और उसको खदेड़ डालो। आणि प्रत्येक दिवस परमेश्वराचा वचन परमेश्वर माझ्याशी बोलतो की तू आत्म्यामध्ये भर, सैतान व सर्व शत्रूंना तू धमकावून टाक. How will God speak in the New Testament days? नए नियम में परमेश्वर कैसे बातें करेगा? नवीन करारामध्ये परमेश्वर कसा बोलतो? First of all, through the Lord Jesus, God will speak with us. सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमसे
हमसे बातें करेगा। सर्वात प्रथम प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे तो आपणाशी बोलतो. Hebrews 1st chapter 2nd verse says, इब्रानी की पत्री 1 अध्याय के 2 वचन पे, इब्री पत्र 1 अध्याय वचन 2. hath in these last days spoken unto us by his son. इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की. तो या काळाच्या शेवटी पुत्राच्या द्वारे आपल्याशी बोलला आहे. Whom he had appointed heirs of all things. जिसने उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, त्याने त्याला सर्व गोष्टींचा वारिस ठेवला. By whom also he made the worlds. उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है. आणि त्याच्याच द्वारे त्याने विश्वाचं निर्मिती केली. Dear child of God, in the New Testament days, Jesus Christ spoken with so many people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, नया नियम के इस करार में यीशु मसीह अनेकों के साथ बातें किया है. प्रियांनो, नवीन कराराच्या पिढीमध्ये आपण पाहतो अशा प्रकारे येशू पुष्कळ लोकांशी बोलला. In the middle of the way, Jesus Christ spoken with the soul and turned his life. और रास्ते दमस्कस की ओर जाने वाले रास्ते में प्रभु यीशु मसीह ने साउल से बातें किया और उसके जीवन को बदल डाला. आणि आपण पाहतो दमस्कस मार्गावरती जात असताना शाऊलची परमेश्वर बोलला आणि त्याचं जीवन त्याने बदललं. Acts 9 chapter 3 to 5 verses. प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 से 5 तक के वचनों में, प्रेषिताचं कृत्य 9 अध्याय 3 ते 5 वचनांमध्ये. Secondly, God will speak with you through the word of God. दूसरा, परमेश्वर इन दिनों में वचन के माध्यम से हमसे बातें करेगा. आणि दुसरं, या दिवसांमध्ये परमेश्वर त्याच्या वचनांद्वारे आपणाशी बोलेल. That is the word of truth. और वो सत्य का वचन. आणि ते सत्याचं वचन. Ephesians 1st chapter 13th verse. एफिसी की पत्री अध्याय 1 वचन 13. इफिसकरास पत्र 1 अध्याय वचन 13. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth. और उसी ने तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार के सुसमाचार है. आणि तुम्ही सत्याचं वचन ऐकलं जे तुमच्या तारणाकरिता आहे. In whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की वे पवित्र आत्मा की छाप लगी. त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि त्याने देव केलेल्या पवित्र आत्म्याचा तुम्हावर त्याच्यासाठी शिक्का मारला. When you believe the gospel of the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जब आप विश्वास करोगे, प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या सुवार्तेवरती जेव्हा तुम्ही विश्वास ठेवता, when you believe the word of God and accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, आप परमेश्वर के वचनों को विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जब आप ग्रहण करोगे, जेव्हा तुम्ही देवाचे वचन ऐकता आणि प्रभु येशू ख्रिस्त माझा व्यक्तिगत तारणारा म्हणून जेव्हा तुम्ही स्वीकार करता, so the promise of the Holy Spirit will seal you. उस समय में परमेश्वर की पवित्र आत्मा का छाप आपको मुद्रांकित करेगा, छाप देगा. आणि त्यावेळी पवित्र आत्म्याचा शिक्का तुम्हाला लागला जाईल. Thirdly, God will speak through the Holy Spirit. तीसरा, परमेश्वर इन दिनों में पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है. आणि तिसरा, या दिवसांमध्ये परमेश्वर आपल्या बरोबर पवित्र आत्म्याद्वारे बोलतो. As I told Isaiah 30 chapter 21 verse, यशायाह किताब 30वें अध्याय के 21 वचन में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यशायाह 30वां अध्याय त्याचा 21व्या वचनामध्ये जसा अगोदर मी बोललो, and thine ears shall hear a word behind thee, saying, this is the way, walk in it. हाच मार्ग आहे, याने चाल, अशी वाणी तुझ्याच मागून कानी पडेल. मग तुम्हाला उजवीकडे जावायचं असावं किंवा डावीकडे जावायचं असावं. जब कभी भी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो. Dear child of God, this is a voice you have to hear every day in your life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वो वाणी है हर एक दिन जो आपको सुनना है. प्रियांनो, हीच ती वाणी आहे, प्रत्येक दिवशी तुम्ही ती ऐकावी. 40 long years I am hearing this voice and living in the world and doing the ministry. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पिछले 40 साल लगातार मैं इस आवाज को सुनते हुए परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं. प्रियांनो, मागील 40 वर्ष मी हीच वाणी ऐकून परमेश्वराची सेवा करीत आलो. In New Testament days, through the Holy Spirit, God will speak with us. नया नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है. नवीन करारामध्ये पवित्र आत्म्याच्या द्वारे परमेश्वर
आपणाशी बोलतो. What the Holy Spirit says, पवित्र आत्मा क्या कहता है? पवित्र आत्मा काय म्हणतो? Acts 17 chapter 30 verse says, प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 30 वचन में, प्रेषितांचे कृत्य 17 त्याचं 30 वचन. and the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. और इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समूह पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य से मन फिराव की आज्ञा देता है. अज्ञानाच्या काळाकडे देवाने डोळे झाक केले, परंतु आता सर्वांनी सर्वत्र पश्चाताप करावा अशी तो माणसांना आज्ञा करतो. Matthew 28 chapter 19 and 20 verse says, मत्ती सुसमाचार के 28वें अध्याय के 19-20 वचन में, मत्तई 28 त्याचं 19 आणि 20 वचन. Lord Jesus had commanded that baptize the people and make them disciples. प्रभु यीशु मसीह वहां पर आज्ञा देते हुए कहता है कि तुम उन्हें बपतिस्मा दो और शिष्य बनाओ. त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त आज्ञा देतो, तुम्ही त्यांना पाण्याचा बपतिस्मा द्या आणि त्यांना शिष्य बनवा. That's why we need the Holy Spirit in these last days. इसीलिए हमें चाहिए कि अंतिम दिनों में हम पवित्र आत्मा को पाएं. यास्तव शेवटल्या दिवसांमध्ये आपल्याला पवित्र आत्मा असावा. Holy Spirit is love of God. It must shed upon your hearts. और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम है जो आपके हृदय में उंडेला जाता है. पवित्र आत्मा ही देवाची प्रीती आहे जे तुमच्या हृदयी अंतःकरणी ओतली जाते. Dear child of God, without the Holy Spirit, God never speak with you, only by the word of God through the servants of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर कभी भी आपसे बात नहीं करेगा, सेवकों के माध्यम से हो या वचन के माध्यम से हो. प्रिय लोकांनो, पवित्र आत्म्या वाचून परमेश्वर तुमच्याशी कधी बोलणार नाही, मग ते सेवकांद्वारे असो किंवा देवाच्या वचनांद्वारे असो. Why we need the Holy Spirit? हमें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? आणि आपल्याला पवित्र आत्मा का हवा? So many blessings are there, time is not permitting. समय अनुमति नहीं दे रहा, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारी आशीषें हैं. आणि वेळ अनुमती देत नाही, परंतु पवित्र आत्माचे सांगण्यास पुष्कळ आशीर्वाद आहे. John 14 chapter 21 and 23 verse says, योनरची सुसमाचार 14 अध्याय के 21-22 वचन में, आणि योहान त्याचा 14 अध्याय 21-22 वचनांमध्ये, by the Holy Spirit, Father and Son will come and dwell in our hearts. पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा पिता और पुत्र परमेश्वर हमारे हृदय में आकर के बसने लगता है. पवित्र आत्म्याच्या द्वारे पिता आणि पुत्र आपल्या हृदयामध्ये अंतःकरणामध्ये येऊन वस्ती करतो. Roman 8th chapter 13 and 14 says, रोमी की किताब 8वें अध्याय के 13-14 वचन में, रोमकरासपत्र 8 अध्याय त्याचा 13 आणि 14 वचन. dear child of God, you can't mortify your members of the body by the Holy Spirit and led by the Holy Spirit. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आपके मरणहार शरीर को आप परिवर्तित करते हुए एक आत्मिक शरीर की ओर रूपांतरित हो सकते हो. प्रियांनो, देवाच्या पवित्र आत्माद्वारे तुमचं जे मरणहार शरीर आहे त्याला तुम्ही परिवर्तन करून अमरत्व जीवन करू शकता. Roman 8 chapter 11th verse says, by the Holy Spirit you quicken your body from the dead deeds. परमेश्वर के प्रिय लोगों, रोमी की पत्री 8 अध्याय के 11 वचन में पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा अपने मरे हुए कामों से आप अपने आप को जिला सकते हो. रोमकरासपत्र 8:11 मध्ये असं लिहिलेलं आहे की पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याद्वारे तुमच्यामध्ये असणाऱ्या मेलेल्या गोष्टींना त्याच्यातून तुम्ही बाहेर निघू शकता. Now, what is the benefits if you hear the voice of God? अगर परमेश्वर की आवाज सुने तो हमें क्या लाभ होगा? परमेश्वराची वाणी ऐकल्यास तुम्हाला लाभ तो काय? When you hear the voice of God, you will be comforted. जब आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे आपको तसल्ली मिलेगा. देवाची वाणी ऐकल्यास तास तुमच्या मनाला सांत्वना मिळेल. First of all, you receive the comfort from the voice of God. सबसे पहले परमेश्वर की आवाज सुनने से आपको तसल्ली मिलेगा. सर्वात प्रथम देवाची वाणी ऐकल्यास तुम्हाला सांत्वना मिळेल. Dear child of God, in the world no one comfort you except the Holy Spirit, the voice of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार में आपको तसल्ली देने वाला कोई नहीं सिवाय परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा के. प्रियांनो, या जगामध्ये तुम्हाला सांत्वना देणारं दुसरं कोणी नाही, परंतु देवाचं वचन, त्याचा पवित्र आत्मा केवळ देईल. Nowadays so many workers and believers crying day and night, who can comfort me? कई लोग दिनों रात सेवकों के पास आकर के रोते हुए कहते हैं कि कौन मुझे
तसल्ली दे. आणि आजच्या दिवसांमध्ये दिवसान रात्र संतगणांकडे लोक येतात आणि म्हणतात माझं सांत्वना कोण करील. According my experience, Jesus only, the Holy Spirit only will give comfort in your life. मेरे अनुभूति से मैं कहता हूं कि केवल यीशु मसीह पवित्र आत्मा के माध्यम से आपको तसल्ली दे सकता है. माझा अनुभव असा सांगतो की प्रभू येशू ख्रिस्त पवित्र आत्म्याच्या वतीने तुम्हाला केवळ सांत्वना देऊ शकेल. That's why practice to hear the voice of God daily in your life. इसी कारण से प्रतिदिन उसकी आवाज सुनने का अभ्यास करो. यास्तव दररोज त्याची वाणी ऐकण्याचं शिक्षण तुम्ही घ्या. Secondly, when you hear the voice of God, you will be never backslide in your life. दूसरा, अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज सुनोगे, आपके आत्मिक जीवन में आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे. आणि जर तुम्ही देवाची वाणी रोज ऐकल्याने तुम्ही तुमच्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये कधीही मागे फिरणार नाही. My heavenly Father who called me, He's a faithful to me. These 40 long years never allowed me to backslide in my life. मेरा स्वर्गीय पिता जो मेरे प्रति विश्वास योग्य है, जिसकी आवाज मैं प्रतिदिन सुनता हूँ, मुझे कभी भी पीछे हटने के लिए अनुमति नहीं दिया. आणि माझा प्रभू येशू ख्रिस्त तो माझ्यासाठी चांगला आहे, ज्याची वाणी मी रोज ऐकतो. गेले 40 वर्ष त्यांनी मला चालवलं, मी कधी माग पाहिलं नाही. So many situations will come to backslide your life. So many blames and accusations and so many persecution will come. Hear the voice of God, you never backslide in your life. आपके जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं, कई प्रकार की आजमाइशें, कई प्रकार की निंदा और अपमान की बातें आएगा, जिसके द्वारा एक व्यक्ति पीछे हट जाता है. किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुनता है, उसके जीवन में कभी भी पीछे हटने का कोई अवसर नहीं. तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये पुष्कळशा कष्टांना, ओझांना, परीक्षांना, अपमानांना सामोरे जाताल, परंतु तुम्ही कधीही मागे फिरू नका. कारण का जो कोणी मनुष्य देवाची वाणी ऐकतो तो कदापि मागे फिरणार नाही. Thirdly, when you are weak and sick, when you hear the voice of God, you will be strengthened by God. तीसरा, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब कभी भी आप दुर्बल, कमजोर, बीमार होंगे और उस समय में परमेश्वर की आवाज अगर आप सुनोगे, आपको शक्ति, एक सामर्थ्य मिलेगा. आणि प्रियांनो, जेव्हा तुम्ही अशक्त असताल, दुर्बल असताल, त्रासलेला असताल, तेव्हा तुम्ही परमेश्वराची वाणी ऐकले असता तुम्ही बलवान व सामर्थी होताल. Psalms 103:20 says, 103 भजन के 20 वचन में, स्तोत्र 103 वचन 20. Bless the Lord, ye his angels that excel in his strength. हे यहोवा के दूतों, तू जो बड़ा वीर हो और अपने वचन के मानने वाले से उसको पूरा करते हो. हे परमेश्वराच्या दूतांनो, जे तुम्ही बलसंपन्न आहात आणि त्याचे शब्द ऐकून त्याप्रमाणे चालता, ते तुम्ही त्याचा धन्यवाद करा. Hearkening unto the voice of his word. और उसके वचन के मानने वाले. त्याच्या शब्दांची ऐकणारे. So many children of God are weak because they don't heard the voice of the Lord. अनेक परमेश्वर के संतान इसलिए अपने आत्मिक जीवन में दुर्बल है, क्योंकि वे लोग ईश्वर की आवाज को नहीं सुनते. पुष्कळ देवाचे लेकरं त्याच्या आत्मिक जीवनामध्ये दुर्बल आहात, कारण का ते देवाची वाणी ऐकत नाही. Through the word of God, through the anointing of the Holy Spirit, you will be strengthened by God when you hear the voice of God. पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे, आपकी दुर्बलता में वो आपको बल, आपको सामर्थ्य देगा. परमेश्वराच्या पवित्र आत्म्याद्वारे, त्याच्या वचनाच्या द्वारे जेव्हा तुम्ही ऐकताल, तेव्हा तुमच्या अशक्तपणामध्ये तो तुम्हाला सशक्त करील. When you hear the voice of God, your inner man will be strengthened. परमेश्वर की आवाज सुनने के वक्त में आपका भीतरी मनुष्यत्व बलवंत हो जाता है. देवाची वाणी ऐकणारा तुमचा जो अंतरुनी मनुष्य आहे तो सामर्थ्यशाली होईल. What is the fourth one? चौथा अनुभव क्या? चौथा अनुभव काय? If you diligently hearken the voice of God, sickness will not come unto you. जब आप पूरे दिल से परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान दोगे, तो कोई भी बीमारी आपके समीप भी नहीं आएगा. देवाचं वचन तुम्ही जर लक्षपूर्वक ऐकले असता, कुठलाही आजार तुम्हा जवळ येणार नाही. Late our beloved pastor Stephen, he was with me in the Secunderabad. That time I come to know that 30-40 long years he never fell in the sick.
और हमारे गुजरे हुए पास्टर स्टीफन जो हमारे चीफ पास्टर थे सिकंदराबाद में हमारे बीच में आने के समय में वो इस प्रकार मुझे अपने साक्षी देते हुए कहा कि पिछले 30-35 साल उसके जीवन में सेवकाई में वो कभी भी बीमार नहीं पड़े. आणि पास्टर स्टीफन जेव्हा ते सिकंदराबाद या ठिकाणी आले होते त्यांच्याद्वारे मला कळण्यात आलं गेले 30 ते 35 वर्ष त्यांच्या जीवनामध्ये आजार आला नाही. When we hear the voice of God, there is no chance to fall in the sick. जब आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे बीमार पड़ने का कोई अवसर ही नहीं होगा. जेव्हा आपण देवाची वाणी ऐकू आजारी पडण्याचं कारणच नसेल. If at all devil falsely bring any sickness, I am the Lord healeth thee. अगर कोई शैतान आपके जीवन में गलती से कोई की बीमारी लेकर की भी आए तो यहोवा परमेश्वर की वाणी यह है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा. आणि जर तुमच्या जीवनामध्ये सैतानाने कोणताच आजार जरी आणला तर देवाची वाणी तुझ्यासाठी ही आहे मी तुझा आरोग्य दाता आहे. When the children of God enter into the wilderness, God first of all told that Exodus 15 chapter 26th verse. जब परमेश्वर इस्राएल के संतान मिस्र देश से निकल करके मरुभूमि में प्रवेश किए उस समय में सबसे पहले परमेश्वर निर्गमन की किताब 15 अध्याय के 26 वचन में यही बात उन्हें बता करके दिया. आणि आपण पाहतो जेव्हा इस्रायल लोकांनी आपला प्रवास अरण्यामध्ये सुरू केला तेव्हा निर्गमन त्याचा 15 अध्याय 26 वचनामध्ये आपण पाहतो हीच वाणी परमेश्वराने त्यांना दिली होती. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of thy God, और उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुने तू आपला देव परमेश्वर याचे वचन मनापासून ऐकशील and will do that which is right in his sight, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे आणि त्याच्या दृष्टीने जे नीट ते करशील and will give ear to his commandments, और उसकी आज्ञा पर कान लगाए त्याच्या आज्ञेकडे कान देशील and keep all his statutes, और उसकी सब विधियों को माने आणि त्याच्या सर्व विधी पाळशील I will put none of these diseases upon thee which I have brought upon the Egyptians. तो जितने भी रोग मैंने मिस्रियों को भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा. तर मिस्री लोकांवर जे रोग मी पाठविले त्यापैकी एकही तुझवरती पाठवणार नाही. This is a promise of God. यह ईश्वर का वायदा है. आणि हे परमेश्वराचं अभिवचन आहे. Read the Bible and hear the voice of God every day. हर एक दिन बाइबल धर्मशास्त्र को पढ़ो ईश्वर की आवाज सुनो. प्रति दिवस तुम्ही शास्त्र वाचा देवाची वाणी तुम्ही ऐका. Lord says, for that I am the Lord that healeth thee. और परमेश्वर यहोवा वचन में इस प्रकार कहता है कि मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला. आणि शास्त्र लेख असं म्हणतो मी तुझा परमेश्वर तुझा आरोग्य दाता आहे. By the Holy Spirit you can hear his voice. पवित्र आत्मा के माध्यम से आप उसकी आवाज सुन सकते हो. पवित्र आत्म्याच्या वतीने तुम्ही त्याची वाणी त्याचा आवाज ऐकू शकताल. Dear child of God, like that 2 Chronicles 7:14 also says, we have to hear his voice. दूसरा इतिहास 7वें अध्याय के 14 वचन में भी इसी प्रकार लिखा है हमें चाहिए हम उसकी आवाज सुने. दुसरे इतिहास 7:14 मध्ये आपण वाचतो की होय आम्ही त्याची वाणी ऐकावी. When you hear the voice of God, there is no chance to any devil to touch you, any sickness will not come in your life. जब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो कोई शैतान ना आपको छुएगा और ना ही कोई बीमारी आपके समीप आएगा. देवाची वाणी जेव्हा तुम्ही ऐकतील तर कुठलाही आजार तुम्हाला स्पर्श करणार नाही. सैतान तुमच्या जवळ येणार नाही. Time is not permitting, I come to the conclusion. समय अनुमति नहीं देता मैं समाप्ति में आता हूँ. आणि वेळ परवानगी देत नाही मी आता समाप्त करत आहे. When you come to the Revelation book, जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब की ओर आते हो आणि प्रकटीकरणाच्या पुस्तकाकडे येतो. God wrote in 7 churches about the voice of God. परमेश्वर ने 7 कलीसिया को 7 प्रकार की वाणी सुनाया. 7 मंडळांना परमेश्वराने 7 वाणी दिल्या. Whosoever heareth, let him hear, the Spirit of God says. परमेश्वर की आत्मा कहता है जिसकी कान हो वो सुन ले. परमेश्वराचा आत्मा म्हणतो ज्याचे कान आहेत त्यांनी ऐको. Revelation 2nd chapter, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 प्रकटीकरण त्याचा 2रा अध्याय
first of all, 7th verse. उसके 7वें वचन में पहली बार, आणि पहिल्याने 7वं वचन, Secondly, 11th verse. दूसरी बार 11 वचन में, दुसऱ्याने 11 वचन, 17th verse. अगला 17 वचन में, आणि तिसरं 17 वचन, 29th verse. 29 वचन में. पुढे 29वं वचन. So God spoken with the 4 churches. वहां पर 4 कलीसिया से परमेश्वर ने बातें की. आणि 4 मंडळांबरोबर परमेश्वर बोलला. And 3rd chapter, 6th verse. तीसरे अध्याय के 6ठे वचन में, तिसरा अध्याय त्याचं 6वं वचन, And 13th verse. 13 वचन 13 वचन And 22 verse. और 22वां वचन. आणि 22वं वचन. Every word says that whosoever heareth, let him hear the spirit of what spirits of God says. यहाँ पर सातों के 7 स्थान में सातों कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा यही कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले. आणि या ठिकाणी 7 ठिकाणी आपण पाहतो आणि 7 वेळी तो म्हणत आहे ज्याला कान आहे त्यांनी ऐको. What is the last verse we can read? हम लोग आखिरी वचन क्या पढ़ने पाते हैं? आणि शेवटलं वचन आपण काय वाचतो? Revelation 3rd chapter 19th verse, the voice of Jesus speaking tonight with you. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 19 वचन में यीशु की वाणी आज की रात आपसे बातें कर रहा है. प्रगटीकरणाचं पुस्तक 3 अध्याय 19वं वचन, आज सायंकाळी परमेश्वराची वाणी तुझ्याशी बोलत आहे. Read that word. पढ़ेंगे. ते वचन वाचूया. जितक्यावर मी प्रेम करीतो तितक्यांचा निषेध करून त्यांना शिक्षा करीतो, म्हणून आस्था बाळग आणि पश्चाताप कर. As many as I love, I rebuke and chasten. Be jealous, therefore, and repent. Continually. Second, 20 verse. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in unto him. Any and man hear the voice of me and open the door, I will come inside. यदि कोई मेरी आवाज को सुन करके अगर द्वार को खोले तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा. जर कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडेल तर मी त्याच्या जवळ आत जाईन. Tonight, God knocking at the door of your heart. आज की रात आपके हृदय के द्वार पर देखो, ईश्वर दस्तक दे रहा है. आणि आजच्या रात्री परमेश्वर तुझ्या अंतःकरणाच्या दरवाजावरती तो ठोकीत आहे. Dear child of God, He is speaking with you directly through the word of God in the spirit. आत्मा में होते हुए वचन के द्वारा सीधे सीधे परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है. आत्म्यामध्ये होऊन वचनाद्वारे परमेश्वर समोरासमोर तुझ्याशी बोलत आहे. Don't live in backsliding life. एक पीछा हुआ पीछे हटने वाला जीवन ना जियो. एक माग हटणारा जीवन जगू नको. Don't live in lukewarm life. आपका जीवन एक गुनगुना सा जीवन ना हो. आणि तुझं जीवन एक कोमट अवस्थेत येत नको. Loving Jesus, moving in our midst. हमारा प्रेमी यीशु हमारे बीच में चल फिर रहा है. आणि आपला प्रेमळ येशू आपल्यामध्ये चालत फिरत आहे. My son, my daughter, open thy heart. मेरे बेटे मेरी बेटी अपना हृदय मेरे लिए खो. हे माझ्या मुला, हे माझ्या मुली, तुझं हृदय माझ्यासाठी उघड. Harden not your heart. अपने हृदय को कठिन न कर. तुझं हृदय कठीण करू नको. If you open your heart, I will come inside and dine with you. यदि तू अपना दिल मेरे लिए खोलेगा मैं भीतर आकर के तेरे साथ भोजन करूंगा. आणि जर तू तुझं द्वार माझ्यासाठी उघडलं तर मी आत येईल, तुझ्या बरोबर अन्न सेवन करील. Tonight, if you hear His voice, आज की रात यदि आप उसकी आवाज सुनते हो, आणि आजच्या रात्री त्याची वाणी तुम्ही ऐकल्यास harden not your heart. आपका दिल कठोर ना करो. तुमचे अंतःकरण कठीण करू नका. Receive the Lord Jesus Christ once again in your heart. एक और बार प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में आप ग्रहण करो. अजून एकदा प्रभू येशूला तुझ्या अंतःकरणामध्ये तुम्ही स्वीकार करा. Whosoever overcometh, I will make him to sit along with me in my Father's throne. और इस रीति से जो भी कोई जयवंत होगा उसे मेरे पिता के साथ मैं उसे बैठने का अधिकार दूंगा. अशाच प्रकारे जो कोणी विजयी होईल त्याला मी माझ्या बरोबर पित्याच्या इथं सिंहासनावरती बसू देईल. Tonight is the last night, understanding the word of God. Open your heart, hear the voice of God. आज की रात हमारे सम्मेलन का आखिरी रात है. परमेश्वर की आवाज को सुने, समझे, अपने दिल को खोले. आजची रात्र ही आपल्या संमेलनाची शेवटली रात्र आहे. देवाची वाणी तुम्ही ऐका,
ती समजून घ्या आणि आपले हृदय तुम्ही खोला. We are came in the last days, so many terrible things going to happen in the world. हम लोग अंतिम दिनों में आकर के पहुंचे, इस संसार में भयंकर भयंकर बातें घटने वाली है. आणि आपण आता शेवटल्या दिवसांमध्ये आलो आहोत. या जगामध्ये भयंकर गोष्टी घडतील. If you are practiced to hear the voice of God, one day you hear the trumpet of the God. Yesterday you heard, that voice will take you to the heavenly place. अगर हर एक दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज सुनने के अगर आप आदी होंगे, तो आखिरी तुर्री जो परमेश्वर की आवाज है आप सुनोगे, तो आपको परमेश्वर स्वर्गीय स्थान में उठा ले जाएगा, जैसे कि बीते कल हमने सुना था. सदैव तुम्ही देवाची वाणी ऐकण्याची सवय ठेवली असता, जेव्हा शेवट तुतारीचा नाद होईल आणि तुम्ही ती वाणी ऐकून तुम्ही परमेश्वराबरोबर जाताल, हे आपण काल सुद्धा ऐकलं होतं. May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे. परमेश्वर आपल्या सर्व